save soil. Thank you so much, sir. Thank you so much for your presence. बहुत बहुत धन्यवाद. देखिए मिट्टी आप लोगों के बैठने से बचेगी नहीं, तो खड़े होकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए. सदगुरु के बीच में आप लोग इतनी जोर से अचानक एक साथ से बोल रहे हो, मुझे सबवे सुनाई दे रही है. बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए. सदगुरु के मार्गदर्शन में शुरू किया गया प्रोजेक्ट संस्कृति भारतीय शास्त्रीय कलाओं की कक्षाएं और प्रस्तुतियां भेंट करता है. इन कलाओं में शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य और मार्शल आर्ट्स कलरीपयट्टू. भारत में हजारों सालों से एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में इन गहन कलाओं का उपयोग किया जाता रहा है. जो कलाकार अभी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा. उन्होंने 7 साल की उम्र से अपना पूरा जीवन इन कलाओं को आत्मसात करने में लगाया. 7 साल की उम्र से. और माइंड के हॉबी की तरह नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके के रूप में. आइए देखिए ये सुंदर प्रस्तुति जो शुरू होगी भरतनाट्यम डांसर श्रीमती राधे जग्गी के नृत्य के साथ. Project Sanskriti is an endeavor to nurture and embody India's classical arts. Designed by Sadhguru, it offers programs to learn powerful chants, music, Bharatanatyam and Kalaripayattu, an ancient martial art form conducted by the vigorously trained students and alumni of Isha Sanskriti. The art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation. Project Sanskriti is not today's idea. It's been in incubation for nearly 25 years. So this is an effort not to save the art form alone, but to bring up humanity to a higher level of existence within themselves.
soil. If I die with this soil, oh my mother, who are you? Soil. In the root there is a stalk. In the stalk there is branch. In the branch, leaves, bud, flower and fruit, all rooted in soil. That is not our making. The soil, the very soul of all life, shall neither perish nor is created, but in a constant turnaround. A tree and a termite, the rough hide of an elephant, and the fine silk of the spider, the beasts that you kill, and the people that you love, all a recycle of soil, soil, and soil. Soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. मिट्टी को खतरा है, मिट्टी लेकिन मरी नहीं। यहाँ पर वैसे क्यों अचानक शांत हो जाता है? तालियां बहुत जबरदस्त प्रस्तुति प्रोजेक्ट संस्कृति और राधे जी की इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका धन्यवाद। इस नृत्य की बारीकी, जटिलता और गरिमा ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। I thank our national sponsor PBR for taking Save Soil movement forward into decisive action. So Guru, last time when I was here in Lucknow, I was here for Rally for Women. I got an opportunity to host that event, मुझे मौका मिला था। उसके बाद से मैंने अपना कार्य नहीं रोका। I did not stop myself. पिछले 5 साल से खेती कर रहा हूँ सतगुरु। और एक चीज आपका शुरुआत से ये हुआ कि हमारे किसानों ने पिछले 5 साल में जहाँ ऑर्गेनिक कंटेंट 0.4% था, एक हफ्ते पहले रिपोर्ट आई थी कि वो 0.96% हो गया।
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम समय के ऐसे मकाम पर हैं जहां हमारे द्वारा किया जाने वाला हर कार्य आने वाले समय के लिए सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। हम सभी इस धरती पर एक साथ रहते हैं और आज हमारे पास एक अनोखा मौका है मिट्टी के विनाश और पूरी दुनिया के रेगिस्तान बनाने की इस विशाल समस्या के समाधान का हिस्सा बनने का। मिट्टी बचाओ अभियान का विज्ञान क्या है, इसे जानने के लिए आइए ये वीडियो देखते हैं। हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की, कार्बन उत्सर्जन की और ग्लोबल वार्मिंग और कई दूसरे पहलुओं की, लेकिन हम मिट्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिट्टी वो निवास स्थान है जहां असंख्य जीव फलते फूलते हैं। जब मिट्टी समृद्ध नहीं रह जाती तो समझिए कि आपने धरती को कई मायनों में त्याग दिया। दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं साफ साफ कह रही हैं कि हम धरती पर केवल 80 से 100 बार ही फसलें उगा पाएंगे, यानी कि हमारे पास धरती पर लगभग 45 से 50 सालों तक खेती करने के लिए ही मिट्टी बची है। सन 2045 तक हम आज के मुकाबले 40% कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी जनसंख्या 9.3 अरब हो चुकी होगी। The food shortages that could manifest in the next 25 years. अगले 25 सालों में जो भोजन का संकट उत्पन्न हो सकता है, उसके नतीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब भोजन की कमी होगी तो पूरी दुनिया में गृह युद्ध शुरू हो जाएंगे। अभी हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो ये है कि मिट्टी गायब हो रही है। मिट्टी गायब क्यों हो रही है? वो कहाँ जा रही है? हमारी मिट्टी के साथ क्या हो रहा है? हमें ये समझना होगा कि अगर आप रेत में जैविक पदार्थ मिलाते हैं तो रेत मिट्टी में बदल जाएगी। अगर आप मिट्टी से सारा जैविक पदार्थ निकाल लें तो मिट्टी रेत बन जाएगी। सामान्य खेती की मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा कम से कम 3 से 6% के बीच होनी चाहिए। सबसे कम है 3%। मिट्टी को जीवित रखने के लिए, मिट्टी को जीवित मिट्टी बनाए रखने के लिए कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। पूरी दुनिया में खेती की मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा खराबी आई है। ज्यादातर देशों में पिछले 100 सालों में मिट्टी की ऊपरी परत का 50% से भी ज्यादा पहले ही गायब हो चुका है। भोजन में मौजूद पोषक तत्वों के स्तर में भारी गिरावट आई है। आपको अपने भोजन से जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते थे 20वीं सदी की शुरुआत में, उसके मुकाबले आज आपको उसी भोजन से जो मिलता है उसमें 90% की गिरावट आई है। 1920 के दशक में एक संतरा खाकर आपको जो मिलता था, अब 2020 में अगर आपको वही पाना है तो आपको 8 संतरे खाने होंगे। हमने अपने भोजन के साथ ये किया है। मिट्टी धरती का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और बहुत कम लोग ही इसके बारे में कुछ जानते हैं। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में शायद इस धरती पर मौजूद लोगों की संख्या से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत के पहले 12 से 15 इंच में उपस्थित सूक्ष्म जीवन ही हमारे अस्तित्व का आधार है। हमारे पैरों के नीचे मौजूद इस जादू ने ही उस जीवन का निर्माण किया है जो हम हैं। पहले 12 से 15 इंच की मिट्टी इस धरती पर मौजूद 87% जीवों के जीवन का आधार है, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। हमें ये समझना होगा कि जिसे हम मिट्टी या धरती माँ कहते हैं वो एक जीवित जीव है। खुली मिट्टी जिसे जुताई करके धूप में खुला छोड़ दिया गया है, यही सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने का कारण है। तो हमारा ध्यान खेती पर होना चाहिए। हमारा ध्यान ये पक्का करने पर होना चाहिए कि जमीन जितना ज्यादा संभव हो छाया में रहे। किसी भी तरह की छाया, घास, पौधे, झाड़ियां, पेड़। कॉन्शियस प्लैनेट मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत कर रहा है ताकि मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए नीति में बदलाव लाया जा सके। इसके एक हिस्से के रूप में मैं 65 साल का हूं और मैं अकेले 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा करूंगा। 24 देशों से होते हुए 30,000 किलोमीटर की यात्रा नागरिकों से सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए, ताकि सरकारों को ये विश्वास मिले कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की सराहना की जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि
इस धरती पर मौजूद हर सरकार की नीति में मिट्टी का पुनर्जीवन शामिल हो। हमें पक्का करना होगा कि धरती पर लोग ये जान लें कि मिट्टी धन है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हमने अपनी पिछली पीढ़ियों से प्राप्त किया है और हमें इसे भावी पीढ़ियों को एक जीवित मिट्टी के तौर पर सौंपना है। अभी हम एक समय पर हैं कि अगर आप अभी सही चीजें करते हैं तो अगले 15 से 20 सालों में हम इस परिस्थिति को काफी हद तक वापस मोड़ सकते हैं और मिट्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे अगले 30 से 40 साल ऐसे ही चलने देते हैं और 40 सालों बाद कोशिश करते हैं तो इसमें शायद 150 से 200 साल लग जाएं, क्योंकि जैव विविधता में उतना नुकसान हो चुका होगा। 21 मार्च से 100 दिनों तक पूरी दुनिया को, इस धरती पर मौजूद हर इंसान को मिट्टी की बात करनी चाहिए। हमें मिट्टी बचाओ जैसे शब्द हर जगह सुनाई देने चाहिए। ये पक्का करने के लिए कि धरती पर लोगों की विचारधारा हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की ओर मुड़े, जो कि मिट्टी है। इसे संभव बनाने के लिए आप में से हर एक को जितने ज्यादा संभव हो उतने लोगों तक पहुंचना होगा। दुनिया के बहुत सारे नेता और प्रभावशाली लोग पहले ही इस अभियान में भाग ले रहे हैं। इसका हिस्सा बने और आइए इसे संभव बनाएं। मेरी ओर से जितना हो सके मैं उतना योगदान दूंगा। आइए व्यवहारिकता और गंभीरता से ऐसे कदम उठाएं जिनका असर महसूस किया जा सके। आइए इसे ज़मीनी स्तर पर संभव बनाएं। मिट्टी बचाओ। आपने जो अभियान शुरू किया है, मैं इससे बड़े ईश्वर के आशीर्वाद की आशा भी नहीं कर सकता था। सद्गुरु, और यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। हम मिट्टी बचाने जा रहे हैं, अपना योगदान दें। और मिट्टी को बचाना है। हमारी धरती का भविष्य इस पर निर्भर करता है। सद्गुरु, मिट्टी बचाओ मेरे दोस्त। मिट्टी बचाओ, आइए इसे संभव बनाएं। एंटीगुआ और बारबुडा मिट्टी बचाओ अभियान का हिस्सा है। आप जो कर रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं, इसलिए MOU पर साइन करके हमें खुशी हो रही है। इस अभियान का बुनियादी विचार, विज्ञान और फिलॉसफी जबरदस्त है। मिट्टी बचाओ, आइए इसे संभव बनाएं। मिट्टी को बचाएं। हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो आइए इसे संभव बनाएं। 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 Sadhguru, thank you for what you're doing. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. وأبدا بالنسبة لنا في رابطة العالم الإسلامي for the Muslim World League, we are completely ready to help you. This is my appeal to every one of you, because I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it is implementable. It is implementable, and we will see a distinct change in the coming few years. The movement that you are taken up as a soil scientist, I could not expect any more God's blessing than that. Your leadership, Sadhguru, and this campaign is so important. You've inspired me to think about soil very differently. I love what you say, that we're all part of the solution and we all have a role to play. I request all of you to come together and join the Conscious Planet movement to save soil. So this is a perfect confluence of how we see things and the importance of the soil. Save the soil. Our soil needs nourishment. Save soil. Let us make it happen. We really welcome the Save Soil movement. Save soil, let's make it happen. I salute you
your energy and your dedication, and my full support of what is needed from the Palestinian side. To honor the people of this country, I want to thank you very much. सदगुरु जी ने यात्रा की, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations. अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को और सदगुरु को मंच पे आमंत्रण देता हूं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई, सेफ सॉइल होते रहना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि now I would like to request Sadhguru to address the audience. Yogi first and then the Chief Minister. Well, in a state so large and with multiple issues and possibilities, how a very determined hand has been turning the state around for the last 5 years is something that we have closely watched. Generally, I'm not saying this as an insult, generally people in southern India believe, oh, UP cannot be fixed. You, I'm talking about you. But definitely the significant change that's happening in the state is phenomenal, and thanks to a very determined hand, and all of you, of course, the youth participating in that process, otherwise it wouldn't be possible. Having said that, UP is one of the most significant agricultural regions, not just in India, but in the world. You have a possession of the largest segment of the Ganga Basin. Ganga Basin, for thousands of years, have been considered as one of the most potential agricultural regions on the planet. And it has spawned many civilizations and cultures.
I was traveling in Eastern Europe, in Bulgaria and that region, they all claim they came from the Gangetic Plain. Long time ago. Today they're all Europeans, but they have maintained a few elements of this. So, in an abundant place like this, what is the problem? Well, the problem is just this, that from 1950s onwards, in the last 70 years, about 90% of the green cover or the tree cover is gone in the Ganga basin, and we built Indian railways from it. We have enjoyed that, we have benefited from that, but it's time to put it back. In many ways, India's agriculture, what happened was, in 1940s and 30s, we had terrible famines in this country. Especially in 1942, nobody can forget that famine where it took 3.2 million people. So, to cross over this famine problem, we approached India's agriculture with emergency measures. We tried to build a bridge across famine situations, which was very important. Many of us are alive today because of that, those steps that were taken. But it was a bridge. If you get onto a bridge, somewhere you have to get off the bridge. If you stay on the bridge for too long, that means it's a bridge to nowhere. That is what has happened. Our Green Revolution was an effort to see that there were no famines in the country, which we managed to do that because since 1960s there's never been a famine in this country. There have been bad agricultural years, that's about it, but we've never had a famine. People have not starved because of lack of food. Such a thing has not happened, which is a great achievement, and we must remember when we got freedom or independence in 1947, the average life expectancy of an Indian was 28 years. Today, we are close to 74 years, which is a significant achievement for this nation. This achievement has been possible because of many aspects. There are many aspects like vaccination processes, medical care and everything, but the most important aspect is that we managed to produce food for 1 billion people. In that process, thanks to our farmers without much technology or infrastructure, just with intrinsic traditional knowledge, they managed to produce food for this nation, for such a large growing population. But at the same time, this pressure of population, when I say pressure of population, we have only 4% of the world's land, but 17.6% of the world's population. This is a tremendous pressure. Unless we manage our lands, particularly our soil, in a very smart way, future generations will suffer immensely, but this is not a reality only with our country. There is not a single nation in the entire world which has an average of minimum 3% organic content. This is the reality. The highest organic content in the world average is the Northern Europe, which is 1.48%. Southern Europe is 1.1%. United States is 1.25%. Africa is 0.3%. India's average is 0.68%, but nearly 60% of the land is below 0.5%. And much of that land, or large tracts of that land are also in Uttar Pradesh. It is I beseech the Chief Minister I've already spoken to the Prime Minister about this, and we have given this document, which is a handbook for making policy. The most important thing that needs to happen is, we need to separate soil from other ecological concerns that we have. We have fossil fuel emissions, we have carbon sequestration from the thing, air pollution, water pollution. There are many issues. All of them are significant issues. I am not trying to say they are not significant. But soil is of existential significance. It is an existential issue. Right now, for the first time in the history of humanity, the top scientists in the world are using the word extinction in relationship with soil. They're talking about soil extinction. Whenever we use the word extinction,
We always thought of a dinosaur or a dodo or some animal that disappeared long time ago. But now we are talking about soil extinction. We must understand who we are is soil. Everything that you have seen as life around you, from the tiniest of worm to insect to bird to tree to animals to human beings, everything comes from the soil, which is just 15 to 18 inches. This 15 to 18 inches of topsoil is the cream of this planet. It is so invested in life that it is zillions of lives, millions of species. The top soil scientists in the world are openly admitting that they know less than 1% of the species present in the topsoil. When you know less than 1%, you should not mess with it. What has been shocking for me in the last 2.5 years as I met various agricultural ministries around the world is 85% of the agricultural ministries in the world refer to soil or treat soil still as an inert substance. They are not seeing it as a living platform. Soil is the largest living system, not only on this planet, in the known universe. This is the largest living system. There is nothing like soil anywhere in the whole universe. Even if you sow death, it sprouts life. This is the magic of soil. Here in this country, we call it our mother. We refer to soil as our mother because we intrinsically understood soil is the mother of our mothers. Everything has come from this, everything that we consider as life. Not only today in the form of food and survival, even in our evolution. Our evolution has happened only because of what is happening in these 15 to 18 inches of soil organisms. In the sense, somewhere approximately 1 billion years ago, a few organisms like algae and fungi started learning how to manufacture their food using the perpetual energy of the sun. This phenomena today we refer to as photosynthesis. Before photosynthesis as a phenomena manifested on this planet, the oxygen levels in the atmosphere were just around 1%. Today it is 21%. You and me are breathing because of this 21% oxygen level. It's not only about today's survival. Complex life on this planet became possible only because of 21% oxygen in the atmosphere. If that oxygen level goes down, we will not be able to survive, nor would have life evolved to the complexity that it has in the form of you and me. But in the last 1,000 years, we have removed 85% of photosynthesis on the planet. What is our plan? India should take a lead because forever we have called soil as mother. In India, Uttar Pradesh, which is the largest tract of land and the most agriculturally prolific land, must take the lead, and especially when you have a yogi. Let me tell you what is a yogi. Not somebody who sits like this and does nothing. That is not a yogi. A yogi means one who is in union. Right now, are you breathing, all of you? Check and tell me, don't just scream. Because one day you will not be breathing. You are breathing. So, you are in yoga, you are in union with the atmosphere. Did you eat something today? So you are in union with the soil that you walk upon. So, you are already in yoga because your existence is yoga. This life cannot happen without being in union with everything. It is always like this. So everybody is a yogi, but unfortunately unconscious yogis. See, if you become unconscious, right now if you become totally unconscious, whether you're living or dead doesn't make much of a difference, isn't it? Hello? So if you're an unconscious yogi, that's what it means, your yoga is dead. If your yoga comes alive, that you become a conscious yogi, consciously you're one with everything, then you are a yogi. All right? So, yoga does not mean twisting and turning, yoga does not mean
doing some weird things. Yoga means you know the oneness of existence around you. So naturally you're sensitive to life. With this sensitivity, if this leadership has this sensitivity, definitely transformation must happen, and I'm very confident it will happen, considering the economic situations. Considering various other compulsions that government may have, social compulsions, economic compulsions, political compulsions, there are so many other things. In all this, my only fear is, it may not go at the speed at which we want it to go. This is why, Yogi is, everybody calls him firebrand. So, with this much fire, UP should go at the fastest pace in the country, so that it becomes a lead for every other state. You cannot go at slow pace because you got Ganga, sir. You have Ganga serving you, so you cannot go at a slow pace, you must go much faster. I know there are many other challenges to be addressed as leadership. Considering all that, you must go at the best possible pace that situations allow you. I know your heart is in this. We want people to support this. This is why I'm trying to move 60% of the people, at least 60% of the adults should stand up and say this. All of you must understand, governments are not elected to do fantastic things. Governments are elected to fulfill people's mandate. Where is the mandate? Where have you given the mandate for long-term well-being of the state or this nation? You're always asking 2 rupees reduction in petrol price, 1% reduction in your income tax. You're getting those things. Unless you stand up and ask for long-term well-being of your state, long-term well-being of your children, the future of your children, and the future of future generations, if you don't stand up and voice that, how can leadership invest in long-term well-being of the nation or the state? So this is what the Save Soil movement is about, to get you up. It's not just your vote in a democratic nation, your voice is important. This is not an agitation, this is not a protest, this is not an expression of anger or resentment, because we clearly understand, every one of us, knowingly or unknowingly, are partners in this destruction. The only way around is, every one of us become partners in the solution. There is simply no other way. Now in this society, it is going on everywhere, drama all over the world. We have found 1,000 different ways as to how we can differentiate from each other. Nationality, race, religion, caste, creed, this, that, every damn thing possible. When there is so many differences and we are super empowered with technologies today, is it not very important that we find some common denominators which are common to all of us? And that is what soil is. We come from soil, we live off soil, when we die we go back to soil. The only question is, do you realize this now and make a difference, or will you realize this when you're buried? You will anyway get it then, but if you get it now, we can make a difference. We can be that generation which turned back from the brink of a disaster. I want to be that generation. You want to be that generation? This happened. Let me tell you a small story. This happened. This happened in 2016. A few scientists sought appointment with God. They got it and they went there. They told God, you've done pretty well with creation, but it's time you retire, because everything that you can do, we can also do. So God asked, so what is it that you can do? They said, look here. They dug up some soil, made a vague image of a human child. They did all kinds of experiments and the child came alive within a few minutes. God said, that's very impressive, but first get your own soil. So this is something that you must understand. There is no substitute for soil. There is simply no substitute for soil.
young people I'm telling you, because as I travel around the world, these 27 nations and also before that United States, everybody is saying, Sadhguru, my friend has made an app that will solve every problem. You think food is grown by Swiggy or something? An app may deliver food to your doorstep, it is fine, it's a service. But somebody has to cook it, somebody has to grow it, it has to come from the land. There is no substitute. Somebody wants to grow it at the wall, somebody wants to grow it in the air, somebody wants to grow it in water. Do whatever you want, it all comes from the soil. Clean water, pure air and nutritious food, everything comes from soil, and these are the ingredients, are fundamentals for a good life. We do not know the future generations whether they will choose to live well or not, but it's our business to see the fundamental foundations for good life are there for them, because the previous generations gave it to us. It's very important we pass on soil as a living soil, a vibrant living soil, a living mother, not a dead mother for future generations. Thank you very much. Save soil. कार्यक्रम में इस पूरे अभियान के जो प्रेरक हैं सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव जी, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपके आगमन के लिए आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री डी.के. सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, CMS के संस्थापक श्री जगदीश गांधी जी और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, 2017 में सद्गुरु का लखनऊ में आगमन हुआ था और उस समय भी उन्होंने एक बहुत पवित्र अभियान दिया था, रैली फॉर रिवर्स। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान हम लोगों ने 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवन दिया है। तीस 30,000 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा के बाद आपका लखनऊ आगमन हुआ है और धरती माता के लिए आपने जो चिंता व्यक्त की है यह अत्यंत सामयिक भी है और वर्तमान के साथ साथ भावी विश्व को बचाने का एक पवित्र अभियान भी है।
वैसे भी ये चिंता आज की नहीं है। भारतीय मनीषा तो वैदिक कालखंड से ही इस बात का उद्घोष करती रही है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि इस इतने बड़े सभागार में हम जितने भी लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराता है। उसके लिए अपना स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड रखता है, चिकित्सक के पास जाता है, नियमित रूप से उसकी स्वयं की समीक्षा करता है और परिवार के लोग भी करते हैं। लेकिन हम सबकी स्वास्थ्य का जो प्रमुख कारक हो सकता है, हम स्वस्थ और आरोग्य रहें, वह धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में हम में से कोई भी व्यक्ति चिंतित नहीं होता है। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कराया और देश के अंदर हर एक किसान को फ्री में सॉइल हेल्थ के लिए उन्होंने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। सॉइल हेल्थ का वह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। लेकिन आज जब इस कार्यक्रम के साथ सद्गुरु स्वयं भी जुड़ चुके हैं और दुनिया के कई देशों की यात्रा करते हुए उनका भारत में आगमन हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की धरती है और उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के दृष्टि से देश का हृदय स्थल भी माना जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भूमि है, ये दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि मानी जाती है। हमारे पास जितना भूमि में उर्वरता है और जितना हमारे पास जल संसाधन है, रेली फॉर रिवर्स और सेव सॉइल, ये दोनों अभियान उत्तर प्रदेश के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी हो सकते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता इस पूरे अभियान के साथ जुड़ेगी। इसमें कोई संदेह रहना भी नहीं चाहिए, इसलिए भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से सॉइल हेल्थ कार्ड जारी होने के बाद अब हम लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग का एक कार्यक्रम हम लोगों ने यद्यपि 2020 में जब प्रधानमंत्री जी का कानपुर आगमन हुआ था, नमामि गंगे परियोजना के कार्यों की समीक्षा करने के लिए, तो उस समय उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि हम लोग एक गंगा यात्रा का आयोजन करें। गंगा हम सबको विरासत में मिली हुई एक दैवीय नदी है, एक विभूति है, एक विरासत है हमारी। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। नमामि गंगे परियोजना के परिणाम किस रूप में आए? कानपुर सीसा मऊ के पास 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा जी में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद आज वहां पर सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बन चुका है और कोई भी जाकर के सेल्फी ले सकता है। गंगोत्री से गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की यात्रा गंगा मैया के द्वारा तय की जाती है, लेकिन ये 2500 किलोमीटर में सबसे क्रिटिकल पॉइंट हुई था कानपुर था। कानपुर में जाजमऊ में 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था
और जाजमऊ में तो कोई जलीय जीव ही नहीं था गंगा में। आज आप कानपुर में जाएंगे, सीसामऊ में शिवर का एक बूंद भी नहीं गिरता, और जाजमऊ में आपको जलीय जीव फिर से गंगा में दिखाई देंगे। ये परिवर्तन वहां देखने को मिला है। वाराणसी में भी हम लोगों ने देखा है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें 2019 में प्रयागराज कुंभ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। प्रयागराज कुंभ की सफलता के पीछे नमामि गंगे परियोजना की सफलता उसका मुख्य कारण था, और फिर हमने उसमें कई मानक अन्य गढ़े। ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और सदगुरु ने भी 2017 में जब आकर के रैली फॉर रिवर्स का एक आह्वान किया था, तो हमारे यहाँ अंतर विभागीय समन्वय से बहुत सारी नदियों की पुनर्जीवन के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, और 60 से अधिक नदियां अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी बड़ी नदियां थी, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम किया है। उसका परिणाम भी आया है। 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 38 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे। वहां पे कुछ जनपद बहुत ज्यादा संवेदनशील थे, कुछ संवेदनशील की श्रेणी में थे। लाखों हेक्टेयर लैंड ऐसी थी जो बाढ़ की चपेट में आकर के नष्ट होती थी, खेती नष्ट होती थी, जनधन की हानि होती थी। आज इसे हम 38 जनपदों से घटाते हुए 3 से 4 जनपदों तक सीमित रह गया है। आने वाले समय में भी जो कार्यक्रम चलेंगे वह इसको और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाएंगे। वृक्षारोपण का जो अभियान यूपी के अंदर हुआ, 5 वर्ष के अंदर 100 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश ने पूरा किया, जिसमें आप में से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के इस वृक्षारोपण के अभियान के साथ जुड़े होंगे। और वृक्षारोपण में हम लोगों ने एक औपचारिकता नहीं निभाई कि यूकेलिप्टस या पॉपुलर लगा लें। यूकेलिप्टस और पॉपुलर 100 करोड़ में नहीं शामिल था। हमने पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, आम है, नीम है, मौरिश्री है, चंदन है, यानी इस प्रकार के वृक्ष लगाए, और व्यापक पैमाने पे इस वर्ष भी हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाने के, वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वन महोत्सव से प्रारंभ करेंगे और प्रदेश के अंदर इसे एक अभियान के रूप में लेंगे। अभी से तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन सेव सॉइल का जो कार्यक्रम है, यह मुख्य रूप से हमें धरती माता से फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड की मात्रा को धीरे धीरे अलग अलग उसमें कम करने के एक अभियान के साथ जुड़ना होगा। और आज उसका विकल्प हम सबके सामने मौजूद है, वह है नेचुरल फार्मिंग की। यूनियन बजट में उसके लिए व्यवस्था पहले ही दी जा चुकी है, और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है, इसमें बुंदेलखंड के पूरे सभी 7 जनपदों को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को बजट में उसका प्रावधान किया है। उन किसानों को प्रोत्साहित करना, गंगा के दोनों तटों पर, गंगा नदी के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे को नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ना। आप आश्चर्य करेंगे कि इसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, और वह है कि कमिश्नरी स्तर पर जो हमारा जैविक प्रोडक्ट आएगा, उसके लिए टेस्टिंग लैब भी हम लोगों ने स्थापित करने की कार्रवाई को वहां पे जोड़ा है। टेस्टिंग लैब होगी और वहीं से हम लोग उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करेंगे। एक बड़ा अभियान है और हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। याद रखना, ये उत्तर प्रदेश की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है, और उन्होंने हमें एक बात की प्रेरणा दी
जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर के होते हैं और इसलिए जननी और जन्मभूमि दोनों के प्रति यह जो अनुराग है यह इस धरती माता से ही हमें प्राप्त होगा। और इसीलिए सेव सॉइल के इस अभियान के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े। मैं सदगुरु को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर के इस अभियान के साथ इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों को भी जोड़ा है। इस व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के साथ आप पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए आज उत्तर प्रदेश में आए हैं। मैं एक बार फिर से आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि रैली फॉर रिवर्स हो या सेव सॉइल, इन दोनों को उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। और उत्तर प्रदेश आने वाले समय में अपनी धरती माता के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखते हुए जिस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है इसे मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिट्टी बचाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में आज उत्तर प्रदेश सरकार और ईशा आउटरीच मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और मिट्टी बचाओ अभियान साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सेव सॉइल पॉलिसी डॉक्यूमेंट सदगुरु भेंट करेंगे। सदगुरु COP15 एनवेलप को भी भेंट करेंगे और हम आशा करते हैं कि ये कदम हमारे देश और पूरी दुनिया के लिए एक सच्चा परिवर्तन लेकर आएगा। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। सदगुरु से निवेदन करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए you can't have a more willing leadership for something like this. So I deeply appreciate Yogi Ji's many efforts. The revival of spiritual centers in UP have been most heartening. And just a few before I left for this journey on the motorcycle, I visited Kashi. If you have not gone there recently, now Kashi is really worth going. You need to go there. Entry to the temple is it is not the original Kashi as it should have been. Maybe that will also happen under his rule. But Kashi is a different experience, and the Ganga in Kashi is a completely different experience today. Thanks to Yogi Ji and Honorable Prime Minister, both their commitment has made this happen, and we very much appreciate his presence here today and his unstinting support for Safe Soil Movement. Thank you very much, sir. Thank you very much. We deeply appreciate what you're doing.
लोगों से निवेदन है, सदगुरु अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सी ऑफ करके पुनः वापस आप लोगों के साथ आएंगे, तो आप लोग अपने सीट पर ही बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।